Hello everyone, just checking in if I'm audible. If I'm audible, please आप comments में लिख सकते हैं अगर आज मेरी आवाज आ रही है तो हिमांशु आप ऑडिबल हैं एक्चुअली बढ़िया यश मैं आपको वही बोलना था यश आज if you can send in a request we'll just wait for more people to join in and yeah maybe start in couple of maybe 5 more minutes by 9:35. yeah sure Akshay, if you can send a request as well. Yes, I got your request. Great, Akshay. Great to have you here. Yes, same here. It's a great opportunity for me. Thanks for the same. No worries. Everyone's pleasure here. So we'll just, as I mentioned, we'll start at 9:35. In a couple of minutes, maybe I'll just quickly give a last week's update to everyone listening in, and uske baad fir we'll do a quick intro and then start from there. Sure. Great. So I'll just start with maybe the last week's update till everyone joins in. And then we will take in questions and ask our experts or resident experts as well on the views on the market which went. Great. So I'll just start with maybe. I think there was an echo on my end. But yes, so last week update में कैसा रहा कि हमारा Nifty 50 and Nifty mid cap was up by about 2%. काफी अच्छा performance रही. Small cap was up by 1%. Silver का हमने देखा I think Friday को it shot up by 5%. There's some news in the metal sector जो हम discuss करना चाहेंगे अपने experts यश राज and अक्षय के साथ. In terms of top gainers, Adani Enterprise का 15% upward moment रहा. In the last week, Bajaj Finserv was up by 9%, Ultratech by 7%. ये सारी चीजें आप comments में भी दे सकते हैं, and I think हमारे platform में Invest with Tribe, if you're following that, तो आपके पास already होगा. Apollo Hospitals had a negative -5% performance the last week, not that great. Axis Bank के results अच्छे नहीं आए थे, and it was down by 4%, and similarly for Maruti. Nifty Metal as a sector gained about 8%. That was sort of a outperformance दिखाया था metal sector ने last week. And we have decent number of people joining in right now. So maybe यश हम आपसे यश आज आपसे start करते हैं. Maybe if you can just quickly introduce, I think काफी लोगों को पहले से ही पता होगा, but to the benefit of new people जो आज join कर रहे हैं, if you maybe you can quickly introduce yourself, and then maybe Akshay if you can do that, that'll be helpful. Yeah, hi Himanshu, thank you for inviting me here.
I've been trading for last 8 years, and I started as an option buyer, and then I joined into F&O segment. I mean, I started trading F&O, and I've been trading this for last 4 years, since 2018. Or I was a discretionary trader first. I started as a discretionary trader, but later on I understood the power of systematic trading, because as we Okay. know that we need to be as objective as we can be, right? Right. बिल्कुल. So because क्या है इस market में, see, there are tons of indicators and tons of systems you can follow, and उनके साथ में अगर आप objectivity के साथ में अगर आप उस system को अच्छे से follow नहीं कर रहे, तो चीजें आपके लिए जो है they won't work in your favor, right? So in 2020 I realized that if a person who's a systematic trader and the system is objective, he could stay with the system. If the system is trend following, you would have made a lot of money if the system was working right in your favor, right? So वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था मेरी लाइफ के अंदर, मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी के अंदर. फ्रॉम देयर लाइक आई स्टार्टेड डूइंग वेल, एंड वहां से जो एक मोमेंटम अच्छा मिला. एंड यू विल इवन नो, आप इस चीज के साथ में यू विल अग्री विद मी दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडर who have made, I mean, who were doing decent in their lives, but 2020 was the year जो ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है? Because उससे पहले like the market started falling very quickly, and it made a very quick gains for the people who were following the trends, and post that the market ऊपर जाना start हुआ तो same चीज वहां भी हुई, ठीक है? अच्छा. एंड बस यही स्टोरी है. इसके अलावा काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, प्रॉफिट लॉसेस सब होते रहे हैं, लेकिन हमेशा से यही एडवोकेट करता हूँ मैं, दैट इफ यू नीड टू मेक मनी हियर, आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना ही पड़ेगा. कभी ना कभी लाइफ की स्टेज में आपको ये नीड जरूर महसूस होगी कि सिस्टम जो होना चाहिए वो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. बिल्कुल. तो आपका अभी you are doing this full time, right? मतलब ट्रेडिंग का फुल टाइम रहता है, या मतलब are you doing this part time, और इसके अलावा भी if there's something else that you work on? ये फुल, इट्स माय फुल टाइम. Okay. I train people too, and I've trained more than 150 people one-to-one basis. So बढ़िया. apart from that, मैं training भी देता हूँ. There are two things which I do, like full time markets, और वो शौक के हिसाब से करता हूँ मैं. तो अच्छा लगता है मुझे, like I mean, interacting with new people and to shape up their trading journey. It is also one thing which satisfies. बिल्कुल. एक वो तो रिकग्निशन, रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है स्टॉक मार्केट में. एक होता है रिकग्निशन और एक थोड़ा गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला. वो आई थिंक कोर्सेज से. एंड टू ऑल द व्यूअर्स, आई थिंक यशराज जी ने मुझे कमिट किया था कि दिवाली के बाद वो कोर्सेज चलाएंगे इन्वेस्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म पे. तो आई एम वेटिंग फॉर यशराज टू स्टार्ट दैट, कि वो हमारे फॉलोअर्स, हमारे कस्टमर्स को भी ही कैन स्टार्ट टीचिंग देम एंड होपफुली हेल्प देम इन द इन्वेस्टिंग जर्नी. Of course. Right. तो अब मैं अक्षय से रिक्वेस्ट करूंगा, अक्षय, if you can maybe give a quick intro. Sure, Himanshu. First of all, I would like to thank you and your team, especially Gaurav ji. उनके साथ मेरी बहुत interaction होती रहती है, and you guys are always supportive as a platform and as a startup. I can understand. मतलब let's give a handful of claps for Invest Tribe first of all. इतना सारा टाइम दे के एक्सपर्ट्स के लिए या फिर जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स है प्लेटफॉर्म पे, उनको इतना प्रायोरिटी पे आप ट्रीट करते हो, वी रियली फील वेरी स्पेशल. So first of all, thank you for that. And coming back to my intro, see, I am not a full-time trader. I'm a part-time trader, you can say. I'm also, I'm having another profession, and जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है. But yes, I started investing in 2008, जो 2008 का fall था. I was just 18 years old at that stage, and मैंने पहले से सिर्फ देखा था कि यार इन्वेस्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है. So उसी नैया में मैं सवार था 2008 से लेके 2015 तक, you can say. So I was like kind of a fundamental guy and everything, कि मोड कैसा है, मोनोपोली है, ये है वो है. But things didn't go so well for me in those days. मतलब ऐसे होता था कि ठीक है रिटर्न तो मिल रहा है ठीक ठाक, but you know that kick we look for, I didn't get it anywhere. So बचपन से सिर्फ इन्वेस्टिंग ही देखा था, मतलब फैमिली में या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी रहता था. बट देन इन 2015 या फिर यू कैन से
2014, जब टेक्निकल एनालिसिस इतना भी ज़्यादा फेमस नहीं था उस टाइम पे, अभी बहुत हो गया उसका चीज़. तो एट दैट टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस बाय वन ऑफ माई फ्रेंड बाय द विद द टेक्निकल एनालिसिस, एंड देन आई गॉट क्रेजी फॉर द चार्ट्स एंड एवरीथिंग. सो अभी भी मैं फंडामेंटल देखता हूँ बिल्कुल. दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ टेक मेंटल, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल. बट टेक्निकल जो चीज़ें हैं, मतलब द वे इट वर्क्स आउट इन द मार्केट व्हेन यू गो विद द टेक्निकल एनालिसिस, इट इज जस्ट सुपर्ब. मीन्स इट्स लाइक यू कैन से इट्स फैसिनेटिंग. सो यही कोशिश रहती है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे along with some fundamentals we can take up some good opportunities. हम कुछ अच्छा कर सके मार्केट में, एक अच्छा खासा रिटर्न भी कमाए, यही कोशिश रहती है. एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी इंडेक्स, और यू कैन से इंडाइसेस तो बहुत है, डाउ जोन्स भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बट आई फोकस ऑन माय गेम. एज यशराज राइटली सेड, सिस्टम होना चाहिए. तो आई कॉल इट इन अदर सिंपल वर्ड्स दैट डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेडर में. और ये बहुत बाद में पता चला 2017-18 में, जब 2-3 साल थोड़े नया थोड़ी गोती खाई उसके बाद. और उसके बाद से जो 2017-18 से जो एक अच्छा खासा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेटअप बन चुका है, तो उसके बेसिस पे और बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा मार्केट ने दिया है अब तक, और शायद आगे भी देता रहेगा. अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इन शॉर्ट, दैट ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, ये जो बुक है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर का, ये मैं बार बार पढ़ता आ रहा. उसमें जो साइकोलॉजी के पॉइंट्स थे, दैट इज द होली ग्रेल दैट वी ऑल लुक फॉर एक्चुअली. मतलब सिस्टम सबके पास है, इंडिकेटर्स रहो, प्राइस एक्शन रहो, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग वर्क्स इन द मार्केट. सारी सिंपल चीजें वर्क करती है मार्केट में. बस वी जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू फॉलो देम रिगरसली. मतलब कभी आज ये कर लिया, कल वो चीज कर ली, परसों और कुछ ट्राई कर लिया, ऐसा करते रहेंगे तो हम घूमते ही रहेंगे मार्केट में. बट इफ वी फोकस ऑन अ सिंगल थिंग इन द मार्केट, तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिटर्न देने के पोटेंशियल बिल्कुल मार्केट में है. एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम फैन बॉय ऑफ मार्क मिनाविनी एंड विलियम ओनिल, जिन्होंने कैंसलिंग मेथड के बारे में बताया, सुपर परफॉर्मेंस बताया. मानस अरोरा भी बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं, पॉकेट पिवट एंट्रीज जो है उनकी, आई एम सुपर फैन ऑफ दैट. सो उसके बारे में बहुत हम बात करते रहेंगे, बट लेट्स नाउ स्टॉप इट हियर ओनली. एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय एमबीए इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और मेरा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने का सपना है, बट इट इज टेकिंग लॉन्गर देन आई प्लान. सो लेट्स सी वो कैसे होता है. एंड योर प्लेटफॉर्म, अगेन आई स्टार्टेड विथ योर प्लेटफॉर्म, आई वांट टू एंड इट ऑन द इन्वेस्ट विद ट्राइब ओनली. इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट, द एक्सपर्ट्स. मैं 2019 से सर्विसेज चलाता था एडवाइजरी की, बट बहुत मुश्किल होती थी. टेलीग्राम चैनल देखो, व्हाट्सएप देखो, सबके क्वेश्चंस आंसर करो. एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्ट विद ट्राइब, एवरीवन सिंपली लव्ड इट. मतलब सिर्फ इन्वेस्ट विद ट्राइब की वजह से मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट द टेबल का अवार्ड मिला था रिसेंटली पुणे में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ योर प्लेटफॉर्म. सो I'd like to appeal to every listener कि do check out the platform. और ये बहुत ही प्यारा है. सर्विसेज ले ना ले, ये आपके ऊपर है, बट प्लेटफॉर्म विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो. एंड आई होप कि ये जल्दी ही जो हम बोलते हैं यूनिकॉर्न बन जाए. यस. Thank you so much for your kind words, Akshay. And for every listener who wants to check out Akshay's profile, यहाँ पर podcast के उसमें है. I'll add it in the comments as well. So you can go and see टेक मेंटल अक्षय's प्रोफाइल. उन्होंने पोर्टफोलियो भी बना रखा है, यहाँ पर सर्विसेज चलाते हैं, हैज बीन डूइंग रियली वेल ऑन अ प्लेटफॉर्म. एंड थैंक यू सो मच अक्षय फॉर जॉइनिंग अस एंड बीइंग अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू सो मच अमन. Thank you. We also have, I think, Trendonomics. Harsh, I don't know whether you have mic access or not, but I see you've joined. So I think everyone, you have been part of our podcast for a couple of times. But Abhi, if you can, if you are okay, if you can maybe speak for a couple of minutes and introduce yourself as well, so that we can involve you in the conversation as well. Okay. Thank you, Himanshu, for inviting. So actually, I just joined in. I was a little busy, but I will give as much as I can. Perfect. So I started trading way back in 2010 with my friend who was a broker, and he introduced me to this field of stock market. So I started trading. We used to trade in penny stock. We used to get tips. So we started trading in penny stock. Then I started trading in FNO, and
Of course, I mean, for initial year, it was a bull run and we made a good money. But when the bear market strike, that's when I started losing Right. it. And that's when I started losing the money, and that's when I started understanding importance of managing the race and having some system. So, rightly said by both the speakers, you must have a system because unless a system you don't have a system, then if you are taking trades in a haphazard manner without taking any study or without taking any efforts, then you are not going to make money. You must have a system, a predefined system of your entry exit, and as well as along with the system will give you entry exit trades, but along with that your risk management is also one of the most important thing, because it's actually your risk and position sizing and your mindset management that makes you a winning trader or a successful trader, because any system you use, whether you use fundamental, you use technicals. In technicals, you have different systems. Price action, Elliott waves. I use. There are market profiles. Some people trade a lot of indicators. All the in a nutshell, I think all the systems fairly give like have a probability of 50, 60, 70%. But that doesn't make you a successful trader. I mean, I don't think that whether a particular system is greater than another system. But what makes you a successful trader is your risk management, your position sizing, and your mindset management. Because, like, I mean, you may have a best system, you may have best of the knowledge, but if you don't manage your risk and if you don't manage your emotions, uh, then बिल्कुल बिल्कुल then it's definitely difficult to be a successful trader, because uh, you have everything in front of you, but when you have to take that decision to buy or sell, to press the button, that unless you are like algo trader, if you are like following if you are going to punch it manually, you must have mindset management, because you are the one who's going to take that decision of buying or selling whatever the trade you want to take. So for that you must have a good mindset management and a balanced mind. So good decision making system, that's all you need to Thank be a successful trader. Thank you so much, Harsh, for that. And glad to have you, Yashraj, and Akshay in a single group. And this will be a lovely, very informative conversation for everyone involved. I think they are all lucky to be part of this. So without much delay, I think काफी questions काफी आ चुके हैं, especially काफी लोग metals and silver के बारे में जानना चाहते हैं. We'll come to that. उससे पहले I'll just make a request. I think एक poll run किया है, just understanding about लास्ट वीक कैसे रहा था सबके लिए परफॉर्मेंस, वेदर यू मेड पॉजिटिव प्रॉफिट और लॉस, या आपने ट्रेड नहीं किया था. इफ यू कैन जस्ट टेक द पोल. एंड आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक या कोई सेक्टर स्पेसिफिक या कोई भी मार्केट स्पेसिफिक पे क्वेश्चन पूछना है, प्लीज ऐड इन द कमेंट्स एंड विल try to make sure that आपके favorite experts answer those questions. And before we get started with this, just one last thing. I think everyone knows that we are part of InvestWith Tribe, and as InvestWith Tribe, हमारा aim है कि you get access to such lovely and great experts like Yash, Raj, Akshay, and Trendonomics here. As you can see their verified returns on a platform, access their services, portfolio services, courses, everything on a single platform. आप real time उनके trades देख सकते हैं. You can transact on that. And इसका हमारा primary purpose इसी बनाने का यही था कि retail investors, people like you and me, can see what experts are trading in and can follow them and trade with them and get better profits. So without further ado, so let's just jump to our first part of the agenda, which is covering last week. So we'll start with Akshay this time. Akshay, how was your last week? Matlab, anything that you found out, anything, matlab, trading was perspective, anything you feel जो had come out in your analysis last week, कैसा रहा आपका?
Yeah, sure. It was actually very good, I can say, because बहुत मतलब profits मैंने book नहीं किए, but I got a pretty decent move on a couple of stocks. जैसे कि Trill हो गया, जिसके साथ Investment Tribe में top expert रहा मैं, and I do not बिल्कुल. trade much in F&O segment, so Nifty and Bank Nifty I can't say much, but I got Trill very good. कल्याण ज्वेलर्स ने भी last 2 weeks में बहुत अच्छा move दिया, so that was also a pretty good trade. एंड परसिस्टेंट सिस्टम जो था उसमें भी काफी अच्छा ट्रेड रहा. सो कपल ऑफ ट्रेड्स हियर एंड देयर आई डिड नॉट बुक एनी प्रॉफिट्स, but considering overall market exhaustion and everything means Nifty was quite sideways in a way, if we can see. Last 5 weeks से bull candles देते जा रहा है निफ्टी, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जिसकी मैं तलाश में रहता हूँ, सो दैट वाज वेरी मच it was pretty good even for the subscribers. They made a lot of profits, I guess 19,000 on a capital of 1 lakh. That's what they made. And Wow. I'm also having a couple of stocks on my radar like Dalmia Bharat and L&T, which are looking pretty good. So हम जब next prediction के चीज को cover करेंगे, at that time definitely I'll discuss those stocks as well. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जो लास्ट में फ्राइडे को मेटल रैली सिल्वर रैली हुई उसके बारे में वर यू एक्सपेक्टिंग दैट कुछ? Yeah. Actually, I was not expecting the rally in metals basically because after a couple of bull candles, it was showing some exhaustion. Matlab, I'm talking about the CNX metal means metal indices बिल्कुल index. बिल्कुल बिल्कुल. But it has recently moved out of the zone 6,300 का जो zone है या फिर you can say a resistance. So it has moved way out of that and I'm expecting 6,800 on the index. So on the basis of that, Tata स्टील रहेगा या फिर जो स्टॉक्स है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ pretty good rally in those stocks as well, in stock specific. Even the Tata Steel, it moved from 98 to 104 just like that, and it has breaking out from the consolidation phase, I believe, and there is no such strong resistance for the Tata metal specifically, so we can see 113 and more than that levels in coming weeks, I believe. ओके, बढ़िया बढ़िया. यशराज, आपका कैसा रहा? एनी टॉप ट्रेड्स जो आपकी काफी अच्छी रही? एंड आई थिंक फेड एंड आरबीआई के दोनों की पॉलिसी अपडेट्स भी थे, तो उसका कैसा इम्पैक्ट रहा आपके पोर्टफोलियो पे? नहीं, मैंने ज्यादा ट्रेड्स लिए नहीं थे बिकॉज आई एम अ अच्छा. स्विंग ट्रेडर. सो Okay. आई हैड शॉर्ट्स इन डीएलएफ. आई एम स्टिल होल्डिंग दैट and I have longs in Z Entertainment. अच्छा So अच्छा. the positions are in marginal profits, but I didn't make any big profits this week because मेरे पास 2 ही positions थी पहली चीज. Or I tried a bit in intraday as well because sometimes when I see that there is a momentum which may come now, so I tried to do some option buying, but that didn't go as planned. So it was a flattish week था मेरा. अच्छा. Because बिल्कुल. of Okay. lesser trades I did actually. That's why. अच्छा, makes sense, makes sense. How about you, Harsh? Trendonomics जी, कैसा रहा? I think you have been a huge bull proponent. We have been speaking with each other for a long time now. So I'm assuming आपका तो बढ़िया रहा होगा. Yeah, I mean, it was a good week. I won't say बढ़िया रहा because I mean, when I'm an option buyer, and obviously, I mean, in option buying you need good profits, and then only you can say that बढ़िया रहा. So I mean, it was a good week. I had decent profits in Jindal Steel. I had decent profit in Vedanta. But actually, I mean, बढ़िया अगर होता कि अगर ऑप्शन बाइंग में मुझे अराउंड 90 और 100% रिटर्न मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन आई वुड हैव बीन कॉल के बढ़िया रहा. बट ओके, so I have been pretty much bullish on metals from the beginning, and I mean right now I'm expecting a huge rally in metals, अच्छा. not just in short term but in long term. I'm pretty much bullish, so my portfolio also consists of metal stocks, and I'm in FN also. I'm trading into metals. So obviously, metal stocks are we're getting a pretty much resistance. So I mean इसके लिए मैं बोल नहीं रहा कि बहुत बढ़िया था वीक, क्योंकि बहुत बार रेजिस्टेंस मिला और थोड़े बहुत couple of stop loss भी हिट हुए थे ऑप्शन बाइज में. So but overall week was good. और the main reason is dollar index जो अभी गिर नहीं रहा था. I'm expecting a huge crash in dollar index, and that will be a very bullish for commodities, bullish for stocks, and specifically metal stocks.
कमोडिटी का जो एक बुल साइकिल रहता है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग बुल साइकिल. Right. It comes once in a decade. The bull cycle Yes. comes once in a decade. So if you see the metal sector, commodity sector, from after 2008 till 2020, it was a big bear market of 12 years. And for the first time in 2020, metal sector of commodities started coming out of 12 year of consolidation. And Okay. So this is not just like a normal thing. This is a big thing, because when any particular sector stock comes out of 10 to 12 years of consolidation, they don't just double triple, but they are usually a multi-bagger. So we already seen 4x 5x rally in 2020. After that we seen a 40-50% crash in metal stocks. That is usual, that is normal in metal bull cycle. uh, and I think now the correction in metal stocks is over, and now we should be getting a good run up again in long term. 2-3 years, we can see a sharp run up in metal stocks as the dollar index starts falling. So I'm waiting for dollar index to start crashing below 109, 108. Then there will be a real move that will come in metal sector. And I'm pretty much bullish on metals and commodities. Okay, बढ़िया. तो अभी I think we have had three four questions specifically next week का. एक question है कि is it the bullish market takeoff? क्या लगता है आपको, हर्ष, अक्षय, यशराज? Yes, no, या wait and watch? According to me, if I okay, okay, please speak. You can go ahead. I will speak later. देखिए अभी recently when we saw Nifty when it was struggling around 18,000 18,100, right? So market ने वहाँ breakout दिया, and if we talk about Wednesday and Thursday, there were 2 days when market struggled around 17,100 200 zone, जहाँ पे थोड़ा सा market अभी Friday के दिन 18,000 के आसपास आया भी था, right? राइट. एंड जो लास्ट आवर में जो बाई आया है, दैट मींस कि आप वीकली कैंडल को देखोगे तो वीकली कैंडल इज अ वेरी स्ट्रांग वन, राइट? So according to me, if you are a buyer from here, if you are willing to go long in markets, or if you have been already holding the longs, what you can do is like 17,900 is the line where if market closes below that, you can go in आपके जो लॉन्ग पोजीशन है उसको आप काट देंगे. 17,900 का जो लेवल है उसके नीचे का क्लोज है, वो आपका एक अलर्ट लेवल है. उसके नीचे आप जो है बाइंग नहीं आपको होल्ड करना चाहिए. अगर वो नहीं जाता है देन यस आप लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे एंड उससे ज्यादा भी ऊपर मार्केट जो है जाने के चांसेस है. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट मंथली चार्ट्स ऑफ निफ्टी, as we had spoken about it multiple times when we did the recent spaces on IWT only. So it was a bullish flag in pole is happening on monthly charts. और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैटर्न होता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, बिकॉज उसके अंदर काफी सारा कंसोलिडेशन होता है, काफी सारे प्लेयर्स जो होते हैं दे आर ट्रैप्ड इन दैट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन. और जब उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो यूजुअली जो है मार्केट टेक ऑफ करता है और काफी क्विकली टेक ऑफ करता है. So उसका जो ओवरऑल टारगेट है that will take years for that target to come, because वो टारगेट 25-26 हजार है. बट फॉर शॉर्ट टर्म आई एम बुलिश अबव 18,000. 17,900 के नीचे का क्लोजिंग जो है that is something which I will reconsider my positions again. बट अभी यहाँ से तो यही लगता है कि हाँ मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए. बढ़िया. एक प्रॉब्लम है प्लीज कंप्लीट. एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है that is seen in bank nifty, because bank nifty has been consolidating, because the relative strength if we compare nifty and bank nifty और bank nifty में से bank nifty is underperforming अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी के लिए 41,500 को क्रॉस करना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर डाइवर्जेंट हो गया, राइट, तो प्रॉब्लम आ जाएगा सिचुएशन के अंदर. तो वो फिर देखते हैं, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा. वो 41,500 के ऊपर अगर वो 41,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यस दैट इज आल्सो परफॉर्मिंग एंड दैट इज आल्सो सपोर्टिंग द निफ्टी बुल्स एक्चुअली. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. चलो, काफी क्लियर. अक्षय, हाउ अबाउट यू?
Yeah, What do you feel? I partially agree with यशराज here. मुझे भी लग रहा है कि 18,600 का लेवल जल्दी दिखाएगा निफ्टी, बट व्हाट आई अच्छा। थिंक इज उसमें आने को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है निफ्टी में, एक गैप फिलिंग पेंडिंग है ऐसे लग रहा है। जो 18,000 का लेवल इन्होंने बताया, आई गेस 17,900 आई गेस, वही सिमिलर लेवल है मेरा भी 17,830। वहां तक मार्केट रिट्रेस होके फिर से ऊपर जाने के चांसेस है, because see if we look at the weekly chart it is looking pretty much interesting. अगर हम देखते कि 5 बैक टू बैक वीकली बुल कैंडल्स लास्ट टाइम कब आए थे, तो वो टाइम था ऑलमोस्ट दिसंबर 20 से लेके जन 21 तक। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव 5 बुलिश कैंडल्स मार्केट ने फिर से देखे नहीं थे। एंड अगर हम उस हिस्ट्री को रिपीट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि उसके बाद निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था, बहुत अच्छा मूव दिया, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं उस निफ्टी ने, बट बिफोर दैट इट रिट्रेस्ड ऑलमोस्ट, मतलब 14,490 से लेके मार्केट आया था 13,500 तक। मतलब एक बार वो डराएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, बिकॉज इवन एवरीवन इज बुलिश अबाउट इट ना, तो वो थोड़ा सा मतलब जो मार्केट मूवर्स है या फिर वी कैन से द बिग प्लेयर्स, सो दे डेफिनेटली प्ले विद द रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस, तो वो एक बार डराएंगे और उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे। एंड मंथली चार्ट अगर हम देखेंगे यार, बहुत ही प्यारा है, मंथली पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, सो डेफिनेटली मींस वी कैन बी बुलिश ऑन इंडिया एज यस सेड आई गेस 25,000 30,000 तो डेफिनेटली है इन कमिंग ईयर्स, बट एक बार डरा के फिर ये ऊपर जाएगा। एंड 17,830 का जो लक्ष्मण रेखा है, ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं टू एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशंस रिलेटेड टू इंडेक्स। बट व्हाट आई बिलीव इज हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द निफ्टी, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रहे हैं स्टॉक्स में भी। मेटल में रैली आ रही है, आई गेस निफ्टी 50 छोड़ के जो एफ छोड़ के मिड कैप सेगमेंट है उस पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहे हैं अभी। सो वी कैन आल्सो गो इंडेक्स स्पेसिफिक एंड वी कैन बी स्टॉक स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। तो ये तो दोनों का काफी सिमिलर ओपिनियन कि मतलब एक रिट्रेस में मतलब वी शुड बी अवेयर कि सकता है कि नीचे ये एक बार डराएंगे, पक्का डराएंगे ऐसे लग रहा है मुझे तो। Yes. How about you, Harsh? What do you feel? So, I mean, I agree with both the speakers. We have a monthly a bullish flag breakout, and that gives a very big bullish target for Nifty, around 25,000, 27,000. That's a long-term target. But if you are a trader, you should be concentrating on short-term. So, short-term traders should keep a stop loss of, like, say, 17,900, 950 level. The lows are made on Thursday. That should be a stop loss for short-term traders, and they can trail their stop losses as the market goes higher. I mean, both the speakers already said the same thing. Another pattern which I'm looking is inverse head and shoulders, and we have broken out of inverse head and shoulders just this week. And we need to see a follow through buying and follow through move. Then we can really see the move coming in. So as long as 17,900 holds, I'm pretty bullish on market in short term as well as like long term. I see 27,000 kind of levels on Nifty. Got it. तो मतलब अभी मतलब यूनानिमस यही है कि वेट एंड वॉच, कि मतलब एक बार बॉटम हिट करेगा उसके बाद देन एंटर इनटू द मार्केट, या मतलब वुड यू सजेस्ट कि टेक सम पोजीशन एंड डोंट गो फुल इन बट टेक सम पोजीशन? Yes. It's better not to go full in. Okay, sorry. You were saying yes. Please continue. Sorry, I thought it was a general question. It's an open question. Everyone can go in. It's an open question. Yeah. Yes, you should. You can. Yeah, Akshay, you can continue. Yeah. Okay, can I answer this one? Anyone. It's an open. Yeah. It's a discussion. Okay. See, this pullback thing which my friend just mentioned. Okay. क्या प्रॉब्लम ये है उस पुलबैक थिंग में कि दैट इज समथिंग व्हिच वी आर जस्ट स्पेकुलेटिंग, राइट? ओके, वो हो सकता है एंड वी मे गो रॉन्ग, राइट? यू विल एग्री ऑन दैट, राइट? मे बी शायद वो पुलबैक नहीं आया, तो अभी राइट नाउ वी हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,900 का मेरा क्लोजिंग। आप क्लोजिंग के नीचे रखो, चाहे 17,830 के नीचे का लाइव स्टॉप लॉस रखो, समवेयर क्लोज करेगा तो वो भी 850, 830, 840 ऐसा ही कुछ होगा, राइट? अच्छा, तो जो ये नंबर है 17,830, आई थिंक आई विल गो विद दिस। ओके, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट योर लॉन्ग्स। ओके, अब सबसे बड़ी बात, जैसे ट्रेंडोनॉमिक्स हर्ष भैया ने कहा है
कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है यू नीड टू मेंटेन दैट थिंग, राइट? यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट एंड स्ट्रेटजी लेटर, राइट? बिकॉज अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है तो यू नीड टू कट डाउन योर पोजीशन साइजिंग, एंड ये जो स्टैंडर्ड रूल्स है वो सभी को पता होता है, बस वो इमोशनल डिलेमा के अंदर वो फॉलो नहीं करते हैं लोग। सो आप उनको फॉलो करिए, और आपको पता है कि इफ आई गो रॉन्ग, which is a higher which is a possibility in the market, if you are placing trades, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो. So if you lose the game, and if 17,830 comes before the target what you are expecting, so whatever risk you are taking, which is basically not disturbing your sleep, जो भी आपका एक नंबर है उस हिसाब से अपना पोजीशन रखो, और मेरे हिसाब से तो पोजीशन ले लेना चाहिए. डू नॉट वेट फॉर एनी पुल बैक. और उसके बाद अगर ब्रेक होता है, पोजीशन जाती है, तो डेफिनेटली देखिए फिर हम समझ जाएंगे यार 18,000 एक ऐसा दीवार है विच इज नॉट बीइंग ब्रोकन, राइट? सो फिर हम ये सोचेंगे कि यार मार्केट में स्टार्ट कंसोलिडेटिंग अगेन एंड इट विल गो डाउन टू 16,000 और 15,000 इन लोअर. वो बात की बात है फिर. Okay, got it. Harsh, So I just wanted to say one thing. So your entry, exit, your stop loss, everything depends on what kind of a trader are you. Whether are you a positional trader who can hold for a month? Are you a short-term trader trading for next 5-10 days, or maybe a ultra short-term trader who is trading for next 1 or 2 days? For them, stop loss, entry, exit, everything depend. Everything is different. So when when we give a level of say 17,830, 17,900, that can't be a stop loss for a short term trader. If market opens at 18,300 and you take a position and you wait for market to hit your stop loss at 17,900, that is not the right way to trade. So for every trader, your entry, exit, stop loss will be different depending upon your risk appetite, depending upon how long you want to hold that position. What is the again, think in terms of risk reward. If you are entering at 18,300, how much upside are you expecting? If you are expecting just 18,500 and you are saying your stop loss will be 7,900, that's not the right way. That's not the right way to trade. So that's why I'm giving the level 17,900. That is the level where I will negate my short-term bullish view. That's not my stop loss. As a short-term trader, that is not my stop loss, definitely. But that is the level I will negate my bullish view for short-term. For every trader, your stop loss should be will be as per your risk and reward. What reward you are expecting? How much you are? What is the time frame you are trading? It will decide your stop loss. So 17,900 is just the level where I negate my bullish view, short-term bullish view. Okay, got it. Understood. Sure, I think काफी questions are. Yeah, and I'd just like to add one thing here, Himanshu. Yeah, the thing is, if when we are going stock specific, or even if we are going, index specific, then we can also use some pyramiding technique. Means what I'm following as of now is, मैं जब pullback expect कर रहा हूँ, then I'm saying कि I'll go 25% and 30% in the stocks, and if the pullbacks comes, I'll simply add some of the position to the existing position, and then after I'll keep the intact stop loss definitely accordingly. एंड क्योंकि अभी अगर हम निफ्टी का लेवल देखते हैं 18,117 का, देन 18,600 इज द अल्टीमेट टारगेट दैट वी आर फोकसिंग ऑन इन द शॉर्ट टर्म, और यू कैन से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एंड 17,800 you can say the stop loss thing. Then the risk reward ratio is not that great if we talk about it. It is just somewhere around 1:1.30 or something like that. So what we can do is we can also use the pyramiding technique, or we can go lot by lot, and then we can see where it goes, and if it comes down we can add up some position in order to make our risk reward ratio even better. So that's what I would like to add on to both. Got it. Yeah, both these. Yeah, makes sense. I think there have been some questions being asked by our listeners right now. I'll request if anyone has any queries, any stock specific help that they require, या कुछ उनको चाहिए, उनको they want to ask something, I'll request them to add in the comments. अभी one comment which has been asked is they want to know about silver. Silver में I think Friday को काफी bump up आया. Some of the we had seen, some of the experts actually predicted. अभी आपको क्या लगता है आगे का futures
on silver specifically, and metals के बारे में I think discuss कर चुके हैं, but in metals and any one apart from silver भी जो it's on your radar in your watch list. मैं कमोडिटी के अंदर काफी एक्टिवली ट्रेड और ट्रैक करता हूँ. बढ़िया. तो सिल्वर के अंदर 58,200 रुपीस के ऊपर एक लेवल था where I started initiating my longs. So trend तो bullish है undoubtedly, because one thing which I follow for short term trades is pivot point, right? So the monthly level का which pivot point is derived by recent months closing high and low divided by 3, summation of all of these 3 and divided by 3. So जब भी market इसके ऊपर होता है, this is a point of equilibrium. If market is trading around pivot, that means market ना consolidation कर सकता है, और अगर उसके ऊपर take off कर जाता है तो there are possibilities कि probability जो है वो bulls के favor में ज़्यादा बढ़ जाती है. और there is this candle which happened on Friday and it was up by 3.72%. तो हम यहाँ पे एक चीज देख चुके हैं that the silver is basing around 57,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है for last 10 days. ठीक है. और there is this triple bottom happened there. मतलब almost वहाँ पे जो है मार्केट 3 बार जो है विजिट करके 3-4 बार विजिट करके ऊपर गया है. So अगर any short term downside or dip, if you get any short term dip around 59,000 rupees, you can go long there. Depends upon अब there are arguments like 57,000 का stop loss रखना चाहिए या बीच में रखना चाहिए. So I might say कि ठीक है 57,000 rupees का stop loss अगर आपको रखना पड़ रहा है तो it's fine, क्योंकि उसके against में हो सकता है आपको 6-7 हज़ार रुपए ऊपर का reward भी मिल जाए, right? So it will justify the whole stop loss system. But उस केस में जब आपको लग रहा है कि यार 2000 पॉइंट का इतना बड़ा stop loss है तो why don't you cut your position down, right? That's the right approach you can do कि आप जरूरी सिल्वर मेगा ही करो, आप सिल्वर मिनी कर लो, आप सिल्वर माइक्रो कर लो. There are a lot of options for all sorts of people in markets. So I think 58,000 के 59,000 के बीच में कोई भी डिप मिले 57 का stop loss रखो and go long. Got it. So what I would suggest, so like I'm not trading in commodities in silver, but like if you are an investor and you want to you have a bullish view, so I have a bullish view on silver. If the dollar cracks, then definitely it will be bullish for precious metals, both gold, silver, and you can, as an investor, you can buy ETFs. So now there is a silver ETF also. So if you are not trading in commodities, you can definitely buy silver ETFs with a long-term view of 2-3 years maybe. Okay. Of course, with a stop loss, but obviously because whether you are a trader or an investor, you should always do a risk management and keep stop loss. तो सिल्वर ETFs के बारे में एक्चुअली मुझे पर्सनल भी सवाल था कि लिक्विडिटी रहती है, मतलब जनरली ETFs के yeah, it is traded, yeah liquidity है. I have personally bought also, so I know. Okay, awesome, बढ़िया. Akshay, any views on silver or you already? Frankly speaking, I'm not actually trading in commodities, but recently I went through the chart when you two were discussing this. So what I can see is there is an RSI divergence on silver और trend line breakout भी लग रहा है. So बहुत अच्छे लेवल्स आने के तो चांसेस है डेफिनेटली, बट इन दोनों ने जब बताया वो ज्यादा सही है मेरे ख्याल से, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग मच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस, सो इट्स बेटर नॉट टू स्पीक मच, सो दैट्स इट. Got it. Within our team, I think there's Rohan, who's a marketing manager. He had a question on his own. So Rohan, if you can just maybe try speaking, and if we will let you know if you're audible. Yeah, hi. Yes, Rohan, you're audible. Yeah, sure. Great. Hi everyone. I'm Rohan. As Himanshu said, I'm working as a marketing manager. So मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, बिकॉज मैंने लास्ट वीक में मेटल्स की बहुत बड़ी रैली देखी. तो आप तीनों में से कैन यू गिव मी सम स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स विच कैन बी गुड एज अ गुड फॉर ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया स्टॉक, देयर आर 2 स्टॉक्स व्हिच आई आइडेंटिफाइड. वन इज VDL एंड सेकंड इज हिंडाल्को. टाटा स्टील के अंदर का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है that is not up to the mark, so I will not go with Tata Steel as of now, but VDL and Hindalco you can definitely choose any day. But VDL उससे भी ज्यादा bullish है because there is this huge inverted head and shoulders उसके अंदर फिलहाल जो है फॉर्मेशन हो रहा है,
और वो ऑलमोस्ट जो है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट. It has already broken out. ओके Broken out. It is already broken out. नहीं मतलब आई मीन हाँ. इट्स नॉट इट्स येट टू बी फॉलोड बैक. उसका फॉलो अप आना जरूरी है. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी हाँ 6-6.5% का कैंडल आया तो डेफिनेटली. एंड दिस हैपेंड आफ्टर अ बिल्डअप. यहाँ पे एक बिल्डअप था. इफ वी टॉक अबाउट 7th of October 6th of October से लेकर के ऑलमोस्ट एक महीना इसका बिल्डअप हुआ है. देयर वाज अ वेरी स्मॉल रेंज फ्रॉम 275 to 300. एंड पीपल हु ट्रैक VDL दे नो इट वेरी श्योर कि इसके अंदर जो है 10% का मूव जो है वो इंट्राडे बेसिस पे कभी कभी आ जाता है. तो अगर महीने भर अगर ये 10% की रेंज में फंसा है तो डेफिनेटली वो बिल्डअप था. और वंस द ब्रेकआउट हैपेंस ये 6-6.5% का. और पिछले 4-5 सेशन से देयर इज अ कंटिन्यूअस रैली फॉर लास्ट आई मीन फॉर 5 सेशंस एंड 270 रुपीज के लेवल से. सो ये अगर परसेंटेज वाइज भी हम लोग बात करेंगे तो रैली परसेंटेज इज समवेयर 17-18%. हाँ इट मे गो इन कंसोलिडेशन फॉर कपल ऑफ डेज लाइक 2-3 डेज. उस केस में हम लोग जो है एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर. और फिर उसका ब्रेकआउट होगा. दैट एंट्री कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गुड एंट्री. Got it. तो Yeah, I VDL तो think मेरे हिसाब से लेना चाहिए. 16% raise हुआ है 4 days में. 16% raise हुआ है in the last 4 days. That's tremendous. And another stock which has inverse head and shoulders is Jindal Steel, which is currently near to the breakout, getting a resistance or maybe selling pressure. But once it breaks above 480, I think it can give a good move. Jindal Steel. Yeah, and I would like to this discussion by JSW Steel के levels बताता हूँ. 701 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है. एंड अगर हम वीकली पे इसको देखते हैं मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है बट थोड़ा पोजीशन व्यू लेके अगर हम चलते हैं तो 810 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है. बिकॉज फिबो का 1.61 का वहां पे लेवल बन रहा है. क्योंकि वीकली पे जैसे ये स्टॉक आया 700 के आसपास इसने पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया था. देन इट केम बैक एंड 50% का रिट्रेसमेंट लेके मतलब 600 से 610 के बीच में इसने एक अच्छा पुल बैक लिया वहां तक. और तब से लेके 700 मतलब 701 तक आया है. वीकली पे थोड़ा सा वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है. बट आई थिंक ये थोड़ा सा साइडवेज जाके थोड़े दिनों के लिए वीकली पे अगर हम इसको देखते हैं मतलब 3 से 6 महीने के लिए सो 700 से लेके 810 तक का रैली ये दे सकता है. एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज क्वाइट डिसेंट. 670 660 का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते या फिर 630 का भी फॉर दैट मैटर तो 30-40 या फिर यू कैन से 50 रुपीज के रिस्क के लिए 100 या फिर 110 के टारगेट्स मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बहुत प्यारा बन रहा है इसमें. सो दैट यू कैन आल्सो ऐड टू योर वॉच लिस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड. बढ़िया. तो तीन स्टॉक्स बताए अभी. वेदांता जिसने 14% रेज किया लास्ट 4 डेज में. जिंदल स्टील का 6% रहा है लास्ट 5 डेज में. JSW जिसका 5% रहा है लास्ट 5 डेज. ये है वॉच लिस्ट पे हमारे एक्सपर्ट्स के. एक क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया. आई थिंक वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट मेटल रैली मेटल स्टॉक्स. Just Himanshu. Basically, and these three are the leading stocks in metal sector. So keep them on radar. Got it. Understood. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि मेटल रैली हमें पता है कि मेटल रैली हमने डिस्कस भी स्टॉक किया कि एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू एग्जिट फ्रॉम मेटल्स क्योंकि काफी फास्ट मूवमेंट होती है. काफी ग्लोबल मूवमेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहती है. तो एक तो हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉस बट कोई ऐसा इंडिकेटर है कोई ऐसा न्यूज है और देयर समथिंग दैट यू आर ट्रैकिंग जिस पे आपको लगेगा कि मे बी दिस इज नाउ अ गुड टाइम टू एग्जिट मेटल्स. सर मैं इस पे बोलूंगा या प्लीज कंटिन्यू. नहीं आप प्लीज या सो इंस्टेड ऑफ इसके पहले मेटल्स का रैली कैसे होता था कि थोड़ा साइक्लिकल ज्यादा था मतलब 4 साल ऐसा साइकिल उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड एंड एवरीथिंग. बट नाउ वी आर सीइंग अ शिफ्ट इन द मेटल रैली ओवरऑल एज वेल. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग we can simply keep on trailing the stop losses based on the immediate support levels. और उसके बेसिस पे हम उसको ट्रेल करते हुए पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हुए थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव. मतलब ये मेरा थोड़ा व्यू है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई ज्यादा दुख होता नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया होता है. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एग्जिटिंग आई थिंक अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो व्हाई नॉट टू होल्ड ऑन टू इट फॉर सम मोर डेज और यू कैन से वीक्स एंड मंथ्स. राइट. तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सिस्टम के अकॉर्डिंग या इज देयर अ परसेंटेज की मतलब सिस्टम या नहीं there is no specific percentage as such but depending upon the price action या फिर उसका अगर movement exhaust होता हुआ हमें दिखता है और and I also track the FII DI movement on the trend line.
तो मंथली बेसिस पे उनका सेलिंग बाइंग हमें इमीडिएटली पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ. सो इफ आई सी कि इस पे बहुत हेवीली कोई सेल कर रहा है FIDI, इफ दे आर होल्डिंग इट ऑब्वियसली, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा मतलब सतर्क हो जाता हूँ कि यार इस पे शायद एग्जिट लेना चाहिए. बिकॉज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द सुपर परफॉर्मेंस थिंग इज, अगर किसी स्टॉक में FIDI एंट्री ले रहे, देन वो 100 and 200% का मूव लेके ही बाहर निकलेंगे. तो अगर हेवीली वो बाहर निकल रहे, और न्यूज में मैं थोड़ा सा नेगेटिव इवेंट्स के बारे में, मतलब अगर न्यूज पे बहुत ज्यादा किसी चीज को फ्लैश किया जा रहा है, देन आई गेट मतलब मुझे अलर्ट आ जाता है कि यार इसको थोड़ा शायद माइन्यूट लेवल पे देखना चाहिए. बिकॉज व्हाट वी कैन सी यस बैंक तो लाइव एग्जांपल था सबके सामने. इतनी अच्छी न्यूज आ रही थी, इतने सारे अच्छे चीजें बता रहे थे हमें कि एवरीवन वाज बुलिश. राणा कपूर वाज सेइंग यार ये तो मैं बाकी सारा बेच दूं, ये नहीं बेचूंगा. एंड व्हाट हैपेंड वी ऑल सी. So instead of going on with the sentiment overall, we can simply focus on the price action. और अगर हमें properly लगता है ना यहाँ से exit करना चाहिए, तो बिल्कुल we can definitely exit on the trailing stop loss. कभी कभी लॉस भी होता है उसमें, डेफिनेटली इट्स नॉट मतलब हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा. कई बार ऐसे भी हुआ है, लॉरस लैब्स में स्पेशली लॉस भी हो गया. 1200 के लेवल्स पे बेच दिया था बहुत सारा, एंड उसके बाद वो 1600 तक गया, फिर स्प्लिट हो गया 438 से लेके. बट ठीक है यार, मतलब बेहतर है अगर हम अपना सिस्टम फॉलो करें, तो इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन. Got it. तो जैसे वॉरेन बुफे ने कहा था कि be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Not exactly like that, but it's better. अगर मतलब कैसा है मैम, इवन इन द पर्सनल लाइफ अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसको छोड़ते थोड़ी ना है. वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड गेट मोर आउट ऑफ इट. अगर हमें अच्छा स्टॉक मिला है, देन व्हाई टू लूज इट ऑफ book full profits. Better to trail stop loss, better to pyramid it, add on to that position instead of adding to a losing stock. It's better to add on to the means अगर JSW Steel अच्छा मूव देता है, 739 का हर्डल भी क्रॉस करता है, तो instead of booking some profits, I'd like to add some more to that stock ताकि वो 810 तक और थोड़ा आगे चला जाए, और फिर कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लाके हम we can definitely enjoy the move upwards. Got it. Got it. Anyone else? Yash, Harsh, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्ष? Sorry. So actually, Akshay has narrated very well. I mean, he has said everything what I could have said, that you should sell the stop loss, and instead of booking, I think adding to the winning position is a good strategy, and maybe booking partial profits on exist when the momentum exhausts. That is the ideal thing, and I think he has already narrated everything very well. So nothing much to say. Awesome. Yes, Raj, anything else that you want to add on to this? Yeah, I would like to add one technical perspective here of mine. Basically क्या है कि जब आपको कोई मोमेंटम स्टॉक मिल जाए, तो देयर आर इंडिकेटर्स टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस. एक इंडिकेटर व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस मे नो कि सुपर ट्रेंड होता है. सुपर ट्रेंड का एक सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट होता है, इट्स 10,3. So 10 is the setting of the ATR and 3 is the multiplication factor. Multiplier factor होता है उसका. So instead of 10,3 you can use 7,1. Let's say if you have captured any momentum stock which has been going up, like जैसे VDL, if you were lucky to buy this stock at 280-85 rupees, what you could have done and what you can do right now is like you can trail your stop losses according to the aggression of your trading. आपका trading style, मतलब if you are very aggressive trader and you have to get out of the stock very quickly, even if like there is a correction of 3-5% which is going to affect you, because if you are a trader and if you have bought that in future and future का lot size let's say 3,000 है, तो 3,000 में अगर 10 रुपए भी आपके पास से जाते हैं, तो it's a decay of 30,000 rupees of your own profits, right? So instead of 7,3 of super trend, you can use 7,1, because it will actually help you in revising your stop losses pretty quick. आप थोड़े से अगर आपके पास पोजीशन है, यू आर अ स्विंग ट्रेडर, लाइक आप कैश में ले रहे हो, देयर इज नो फ्यूचर पोजीशन यू हैव एडेड, तो उस केस में आप सुपर ट्रेंड का 7,2 का भी आप यूज कर सकते हैं. बट ओनली डू दिस, डू नॉट टेक एंट्री ऑन दिस सिस्टम, ओनली रिवाइज योर स्टॉप लॉसेस. उससे ये होगा कि जब भी कोई मोमेंटम पोजीशन होगी, व्हेन द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, यू विल बी एबल टू होल्ड दैट ट्रेंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड. ये एक चीज है जो आप देख सकते हैं. एंड
अकॉर्डिंग टू योर ओन अग्रेशन आपको जो है सुपर ट्रेंड का सेटिंग आपको जो है वहां पे टेस्ट करना पड़ेगा. Got it, got it. तो आई होप बिनो जी ने क्वेश्चन पूछा था @binuchari ने. होपफुली आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा. लास्ट दो क्वेश्चन थे एक सिल्वर वाले पुष्कर जी, होपफुली आपको हेल्प हुआ होगा इसमें. एंड बुलिश मार्केट का क्वेश्चन रशीद ने पूछा था. एक और क्वेश्चन आया है कुंजल पुनामिया का, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट. वो पूछ रहे हैं कि गोल्ड व्यू इन गूगल व्यू पे कोई रिकमेंडेशन या कुछ view hai in dollar terms. I think Trendonomic Harsh, you had started this conversation with a view on gold, so I'll ask you maybe if you can go first around this. Yeah. So as the dollar index starts falling, it will be bullish for precious metals. But right now I'm not tracking for trading commodities, gold and silver. So what I would suggest, instead of trading them, one can go and buy gold ETF or silver ETF that is available in NSC. You can easily buy. There is a liquidity. There is no issue of any liquidity. You can definitely buy it and hold as an investor. For trading perspective, obviously you need to track the trend, and then you have to decide your entry. But at least as an investor, you can start building some positions. Got it. तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपका पॉजिटिव है. शॉर्ट टर्म अभी यू मतलब अगर ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म Short term इंट्राडे depends on the dollar index. डॉलर इंडेक्स का, तो कुछ ऐसा मतलब इज देयर अ नंबर दैट यू आर ट्रैकिंग कि इफ दिस कम लोअर देन दिस देन maybe it's a good Yeah, time. so once the dollar index starts trading below 109, that will be Okay. the key. That will be the key indicator for the dollar reversal and the downtrend in dollar. So we are close to that. Right, we are at 110.8 right now. So 109 is what you're tracking. Akshay, Yashraj, any views on Akshay? If you can go first, maybe I know you don't track metal specifically, but any views on gold? Yeah. Definitely. अभी जैसे उन्होंने mention किया, at that time I actually looked at the gold chart because I do not follow that much, frankly speaking. So recently it has made a double bottom pattern, I can see. Acha, And right. there is a trend line which it might resist ऊपर जाके, because daily chart पे तो बहुत strong दिख रहा है. But overall अगर trend हम देखते हैं इसका तो थोड़ा सा मुझे sideways ही लग रहा है. मतलब momentum आने के chances मुझे see, I'm analyzing this from a stockish point of view, so I'm not much aware about the gold and silver. So Yash and Harsh Bhaiya, correct me if I'm wrong. So मुझे लग रहा है कि 51,820 का जो लेवल है यहाँ तक ये जाने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ सकता है, एंड दिस माइट बी द फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, एंड इसके बाद इट कैन गिव अप अ गुड मूव इन ऑर्डर टू ब्रेक अबव द कंसोलिडेशन. दिस इज व्हाट आई फील. Got it. Interesting. Yashraj, any views on gold? I think आपका तो commodities में रहता है काफी. तो are you tracking gold right now? Yeah, I've been tracking gold. ज्यादा नहीं, सिल्वर ज्यादा ट्रैक करता हूँ, but still I can comment on this. गोल्ड के अंदर फिलहाल राइट नाउ गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है वो ना सिर्फ कमोडिटी ना सिर्फ इक्विटीज में होता है, वो कमोडिटीज में भी होता है. जैसे देयर आर थ्री सेगमेंट्स इन कमोडिटीज, बुलियंस, बेस मेटल्स एंड एनर्जी, राइट. सो सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो बुलियंस के अंदर आता है. सो बेसिकली कमोडिटी में डेडिकेटेडली देयर इज दिस इंडेक्स व्हिच दे हैव मेड, दे फॉर्म्ड बुलडेक्स करके, ठीक है, जिसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर का जस्ट लाइक निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 स्टॉक्स का जो एवरेज होता है, जस्ट लाइक दैट बुलडेक्स उन्होंने बना करके रखा हुआ है. सो उनका ये मानना, जब दे आर आल्सो अज्यूमिंग इट दैट इफ silver will move up or either one of it will move up or if it will show the same direction, chances है कि दूसरा वाला भी जो है उसको फॉलो करे, ठीक है. फिलहाल गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग एज ऑफ नाउ. मैं इस चीज के साथ अग्री कर रहा हूँ कि राइट नाउ व्हाट हैपेंड इन द गोल्ड यूएस चार्ट, जो कॉमिक्स का चार्ट है, वहां पे क्या हो रहा है, देयर वाज दिस सपोर्ट ऑफ $1690 और $1690-1700 का एक सपोर्ट था. मार्केट वेंट बिलो दैट, बट एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड बेयर ट्रैप. सो मुझे राइट नाउ इन गोल्ड आई बीन सीइंग द बेयर ट्रैप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड को ऊपर की तरफ में जो है ब्रेकआउट देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है दिस इज समथिंग व्हिच आई एम सीइंग हियर ऑन द चार्ट्स एज वेल, कि अगर 51,000 रुपए के ऊपर अगर बढ़िया से क्लोजिंग हो जाती है, and if market does not close below 50,000, this is the number which you need to remember because it is the low of Thursday candle.
Okay. अगर 50,000 का लो नहीं ब्रेक होता है then you might see 53,000 and above levels in gold. Got it. तो जैसे ट्रेंडोनॉमिक्स का व्यू था कि शॉर्ट टर्म में मे बी वेट एंड वॉच एंड लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव, आपका भी वही है या लॉन्ग टर्म में भी आप थोड़ा वेट करना चाहेंगे टिल द लेवल्स आर रीच? नहीं, मेरा ये मानना है कि 51,000 रुपीस के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो फिर आपको लेना चाहिए. यू शुड नॉट बी वेटिंग एनी मोर, बिकॉज मैं जो है गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस, मैं इन 5 सेगमेंट्स को जो है आई ट्रेड देम वेरी फ्रीक्वेंटली. लाइक ये मान के चलो आपकी किसी न किसी सेगमेंट में हर हफ्ते एक न एक बड़ी ट्रेड होती ही होती है. सो yes, that is something which I can rely on. My system is also saying कि 51,000 के ऊपर सिस्टम अगर ये जाता है तो आप 53,000 रुपीस तक के लेवल्स देख सकते हैं. बिकॉज there was this in comics chart there is this trend line जिसके अंदर चैनल लाइन के थ्रू मार्केट रेजिस्ट कर रहा है. ऊपर की साइड मोमेंटम आने में डेफिनेटली इट माइट टेक टाइम बिकॉज $1730 का एक लेवल है विच नीड्स टू बी ब्रोकन फर्स्ट. दैट ब्रेक्स आउट फर्स्ट, उसके बाद में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मूव गोल्ड के अंदर आएगा. लेकिन अगर आप MCX के चार्ट भी अगर देख रहे हो, बिकॉज देयर इज दिस USD INR थिंग गोइंग ऑन दैट आल्सो अफेक्ट्स द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन कॉमिक्स एंड MCX लेवल्स. तो यहाँ पर आप 51,000 रुपीस के ऊपर जो है आप डेफिनेटली यू कैन इनिशिएट योर गोल्ड पोजीशन लॉन्ग्स. ये देखना है आपको कि वेदर इट सस्टेन्स अबव दैट और नॉट. सो अगर आप गोल्ड मिनी में काम करते हैं या फिर जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, you are not trading gold mega where the every single rupee you will lose like 10,000 100 rupees का जो move होता है, 100 का lot size होता है. Right. अगर वो केस नहीं है, if you are not building big positions, then you might wait for some time and you can wait for 51,000 closing to happen. उसके बाद आप लीजिए. बिल्कुल. Thank you so much. So, I think, yeah. Sorry to interrupt. So I agree with the 51,000 level said by Yashraj. For short term, definitely one can initiate positions, but to get the trending move, a good trending move, 52,100 is the level above which we will get the real trending move. So obviously, I mean, if you are a trader and looking to build a position, हर्ष भी, मैं भी आपके साथ अग्री कर रहा हूँ कि 1730 को ब्रेक होना जरूरी है कॉमिक्स में भी. yeah. So like 51,000 you can initiate and 52,100 is the level above which we will get the real move. Got it. बढ़िया. I think unanimous verdict experts द्वारा. I think यशराज आपसे सुन के ऐसा लग रहा है कि maybe we should have a session just on how to trade commodities. I think मेरे लिए especially काफी useful रहेगा. I am not that much of a commodity trader, but I think वो काफी useful रहेगा. Hopefully कुंजल जी आपका I think you have responded back as well. आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा. एक और क्वेश्चन आया है, लास्ट वन ऑन द स्टॉक्स, स्पेसिफिकली अशोक पारिक जी का, जो पूछते हैं, जो कैपिटल मार्केट्स में हैं, प्रोफेशनल हैं, सोशल वॉलंटियर भी हैं, हु आस्क कि मैंगलोर केमिकल्स पे कोई व्यू है एक्सपर्ट्स का. Harsh, I think I'd seen your one of the views, I think, of Mangalore Chemicals, but if you don't mind going first, and then we can take Akshay and Yashraj. Mangalore Chemicals. Yeah, so I was bullish on Mangalore Chemical, but as I said, I don't hold my position if the stock does not give the follow through buying. So the follow through buying was missing, so I exited the position. It is not giving any follow through buying, and so I would rather wait for the stock. Currently, I have no view. Got it. Akshay? अगर existing position hold करते हो and if you do not want to exit as of now, then एक stop loss 65 से लेके 66 का level है, डे क्लोज बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं. बिकॉज वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो बहुत हेवी फॉल आया है, कोई भी डर जाएगा ऐसा फॉल है. तो वी कैन वेट फॉर दिस लेवल 66 का, बट दिस इज अगेन स्टॉप लॉस लेवल. मतलब वहां पे आने के बाद ऐड नहीं करना है, बिकॉज स्ट्रेंथ तो ज्यादा नहीं दिख रही है फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे स्टॉक में. एंड आई डू नॉट नो मैंगलोर केमिकल्स मच फंडामेंटली, सो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट. बट जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन, उसके बेसिस पे 66 से लेके 65 का डे क्लोज बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो. उसके भी नीचे अगर ये आता है तो डेफिनेटली इट्स बेटर टू एग्जिट, बिकॉज उसके बाद तो सीधा ये 40 या फिर 26-27 तक आ सकते हैं. सो इट्स बेटर टू एग्जिट एट दिस लेवल. और मतलब जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है तो ये एक ही नहीं है, बाकी सारी भी अपॉर्चुनिटीज है. सो मुझे पता है ये प्रैक्टिकली मतलब ये बोलना एक बात अलग होती है, किसी स्टॉक से बाहर निकलना, एंड एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ इट इज अ होल डिफरेंट थिंग.
बट ट्राई टू फॉलो इट. अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकली ये अगर नीचे आ जाता है 65 के, इट्स बेटर टू एग्जिट. एंड इफ यू वांट टू ऐड इट तो फिर कोई स्पेसिफिक ट्रिगर का हमें वेट करना चाहिए. इट्स नॉट better to add it either at these levels or even at 66. It's better to avoid the stocks if you're not holding it as of now. Yeah, definitely. I mean, actually, I was not looking at the stock. I just watched the chart, and I'm thankfully I exited the stock. I mean, I had a bullish view, but obviously, you can't be 100% right. So I just watched the stock, and it is sitting at 85. So I had position around 120, 25. I exited with a minor loss around 124, 22 something, and now it is almost down 40%, right? So I mean, your exit is most important thing, not just entry. So stock did not move, it did not give a follow through buying, and I exited, and now it is 40% down. So how important your exit is, that tells you how important your exit. If the stock does not move, don't hold the stock, just exit it. True. काफी Because negative. it has given. Sorry to interrupt, but Yeah. it 105 के ऊपर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था. मींस बट अगेन ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया. बट नाउ एज हर्ष सर राइटली सेड, तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे एग्जिट किया. बट जो अभी तक स्टॉक में है, दे माइट बी, मतलब बहुत पेन होगा उनके दिल में, आई कैन इमेजिन. तो अशोक जी, काफी नेगेटिव व्यू रहा है एक्सपर्ट्स का. आप प्लीज कमेंट में लेट अस नो वेदर यू आर होल्डिंग पोजीशन और यू आर थिंकिंग ऑफ एंटरिंग, बट काफी नेगेटिव व्यू एक्सपर्ट्स का. यशराज, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन मैंगलोर केमिकल्स? नहीं, इफ यू विल बी लुकिंग एट मंथली चार्ट्स ना, तो ये जो फॉल अभी आया है ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली. ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट देखेंगे तो फ्रॉम पोस्ट 2021 फरवरी का एक कैंडल था वेयर मार्केट वेंट फ्रॉम 54 अप टिल 87. उसके बाद से वी हैव सीन दैट मार्केट नेवर ब्रोक बिलो 60 रुपीज. तो इसने ना, देयर वर मल्टीपल अटेम्प्ट्स जहाँ पे इसने 60 को ब्रेक करने की कोशिश किया था. इफ आई एम करेक्ट, लाइक समवेयर 5-6 अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे कि मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. आप अगर ईयरली पीवट देखेंगे, इट इज एट 71 रुपीज, 71.90. ओके, सो मेरे हिसाब से अगर इफ यू हैव नॉट टेकन दी लॉन्ग्स ऑलरेडी एंड यू आर नॉट सिटिंग हियर, आपको अगर फ्रेश लॉन्ग्स लेना है, दिस इज एन एब्सोल्यूट ऑसम अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, कि आप 70 से 65 रुपए के बीच में आप इसके अंदर आप एंट्री लीजिए. मंथली कैंडल, अब देखिए सीधी सी बात ये है कि 70 रुपए का स्टॉक है, कोई 1 लाख स्टॉक तो आप बाय करने वाले हैं नहीं, राइट? आप अपने हिसाब से जो भी आपका कैपिटल है उसका जो है मैक्सिमम रिस्क, मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए समवेयर की अगर 55 रुपीज के आसपास मंथली कैंडल का ब्रेक हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आपको 15 से 20% का स्टॉप लॉस यू नीड टू कीप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो उस हिसाब से पोजीशन लेना चाहिए जहां पे आपका इट शुड नॉट ईट मोर देन 2% और 3% ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल. आपको पता है इफ 55 गोज मेरा इतना लॉस होना चाहिए, उसी हिसाब से यू नीड टू बिल्ड योर पोजीशन साइजिंग. मेरे हिसाब से दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी यू शुड गो विद. गॉट इट. तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, दो एक्सपर्ट्स का नेगेटिव व्यू रहा है, एंड यशराज जी बोल रहे हैं कि इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड. नहीं, my view will be negative if someone is holding it from 110 rupees. उसने 110 रुपए पे लिया है, तो it's not a good thing that you are holding that stock without keeping any stop loss. Stop loss, right? But अगर किसी ने नहीं लिया, but हाँ, क्योंकि आप देखोगे कि yeah, because I follow a system where RSI goes below 50 and that is somewhere I look for buying opportunities. क्योंकि क्या होता है बेसिकली, a lot of people follow this system where RSI goes below 50, they look for short opportunities. But according to me, मार्केट जो है वो आपको डिफरेंट तरीके से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप if everybody is doing something and you will follow them, definitely you will lose money. This is the recipe of failure only. So you need to do something different other than दूसरे लोगों से. So मेरे हिसाब से ये चीज है कि अगर इसको 75-70 रुपीज के आसपास कहीं मिलता है, डेफिनेटली लीजिए. और मैं वैसे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ इतना पैसा है इस तरीके के स्टॉक्स में, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन लॉन्ग. Got it. Understood. Ek, I think Rohan ka, I think we have already passed the Varna mark. Thank you so much for the experts to continue their engagement with us. I think Rohan, if you're still there, I think you had a question. Yeah, I just want to know, apart from metal, are there any other sectors that you guys have good view?
Yes. I have identified 4 sectors overall: auto, PSU banks, and media. और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मारुति एंड M&M फॉर ऑटो, SBI एंड स्पेशली फॉर PSU बैंक्स, एंड मीडिया में आप सन फार्मा में, सन टीवी में जाइए। डेफिनेटली सन टीवी के अंदर एक बहुत बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और सन टीवी के अंदर आपको बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है। So I also agree with auto and PSU banks, and I agree with the stocks also. And apart from that, one more sector I'm bullish is capital goods. So I'm bullish on BAL, L&T. Got it. And and the ये capital short goods term sector. view है, medium term मतलब 1 to No, 3 months? long term. I mean, short term also it's bullish, and I'm long term bullish on this sector. Got it. यशराज जी, आपका भी मतलब long term view था और is it short term? What's ये मतलब शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के बीच में, लाइक यू कैन Got it. इनिशिएट पोजीशन फॉर कपल ऑफ मंथ्स, दो 2.5 महीने के आसपास। Got it. How about you, Akshay? Anything that you keep tracking? Yeah. Any sectors? Definitely. Instead of means I agree with both of these. PSU banks तो I'm very much bullish on. उस पे 2-4 वीडियोस भी हो गए recently. तो almost मतलब ऐसे हो गए कि अरे उसको छोड़ के कुछ और कवर करो, तो इतना हो गया. But central bank was also looking good. And other than that, जो Nifty IT है जिसके ऊपर हम कई दिनों से अभी bearish है, वो भी मुझे कुछ अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है. Means stocks like Wipro and Infosys might also do good. बिकॉज निफ्टी आईटी अगर हम देखते तो इट इज समवेयर अराउंड 50% लेवल ऑफ फीबो. तो ये जो लेवल है 1500 एंड 600, 15,600, इससे ज्यादा से ज्यादा वो नीचे आके 22,350 तक आ सकता है, वो भी नहीं आएगा. तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हम, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिड टर्म और यू कैन से positional trades 15 months से लेके 24 months, then we can also find some good opportunities in IT stocks as well. As far as stock specific view, L&T and Dalmia Bharat, इसमें बहुत अच्छा, they are on a edge of a breakout. तो they are moving ahead. मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट लेंगे अगले हफ्ते में. एंड जो रीटेस्ट के लेवल्स है, कमिंस इंडिया रहेगा एंड अनदर वन इज परसिस्टेंट. तो ये दो स्टॉक्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड इन ऑटो स्टॉक्स M&M भी अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, जो कि जिन्होंने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, रैली भी दिया है, एंड अभी रैली के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो एग्जॉस्ट होने के बाद ये फिर से जब बिल्कुल अपने फ्रेश मूड में आएंगे तो उसके बाद बहुत अच्छा खासा रैली दे सकते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक. Got it. Yes, and if we talk about Diwali to Diwali stocks, then I have also recently covered in one of the videos. Then there are 3 to 4 stock specific ideas which I'll later on post. Means I'll share it with you. We can share it on the page or anywhere else. तो उसपे specific levels के साथ मैं थोड़ा सा उसको बस levels एक बार confirm करके देना चाहता हूँ. That's it. Got it. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं रेमंड का. रेमंड आई थिंक हैज मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई. मतलब हमने वो सेक्टर कवर नहीं किया, सो आई थॉट आई जस्ट कवर दिस. रेमंड के ऊपर कोई व्यू? आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया था. Yeah, it is trading somewhere around all time high 1300 के आसपास का लेवल था कुछ. और एक बार वहां पे गया था स्टॉक, आई थिंक अक्टूबर, मतलब अभी रिसेंटली 10 या 12 अक्टूबर के आसपास. उसके बाद ये फिर से आया था. डेली कैंडल्स तो बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट आई थिंक मतलब इट इज बेटर टू ऐड, बट एडिंग इन अ फैशन ऑफ पिरामिडिंग इट्स बेटर. क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी मतलब रिट्रेस करता है, ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर चुका है, तो उसके बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो 1150-1140 वुड बी अ गुड लेवल टू ऐड ऑन टू सम. 1300 पे ऐड करने से अच्छा थोड़ा सा अगर नीचे हम ऐड कर सकते हैं इसको. एंड एज ऑफ नाउ 1290 के जो लेवल्स है 1290, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं. बट instead of going fully bullish on this stock at this level, it's better to add on a pullback is what I believe. Got it. Right. I think that is the time that we had. Any closing comments, any news, anything that you're keeping a track of for the next week? Anything that the traders, investors should keep an eye out on? Like last week was a major week जहाँ पे काफी decisions आने थे. अभी anything that you guys are keeping a track of? Or yeah.
Yeah, one thing I would like to say here, Himanshu, is अगर हम यूएस मार्केट के साथ अपना इंडियन मार्केट कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हुआ. मतलब अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी की, तो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट हुआ नीचे, बट हम बस 15 से 20% ही डिस्काउंट हुए थे नीचे, और वहां से एक अच्छा खासा अपवर्ड रैली भी आया है. एंड व्हाट आई थिंक इज यूजुअली अगर हम पिछले 3-4 इलेक्शन देखते हैं 5-5 साल के बाद जो आ रहे, तो इलेक्शन का जो पहला ईयर होता है, मतलब 2024 में इलेक्शन आने वाले, 2023 विल बी अ मैसिव ईयर. इलेक्शन के जो पहला साल होता है इलेक्शन के प्रीवियस ईयर ऑफ इलेक्शन, उसमें बहुत अच्छा रैली आता है और इलेक्शन के आसपास थोड़ा आई गेस प्रॉफिट बुकिंग आता है. तो 2023 के लिए आई एम वेरी मच बुलिश ऑन निफ्टी एंड आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एज वेल. सो हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं आने वाले साल में, और थोड़ा सा हम पुल बैक भी देखेंगे इंडेक्स में शायद, और उसके बाद एक अच्छा खासा रैली आएगा. पीएसयू स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसा लग रहा है, आईटी स्टॉक्स एज वेल एंड द ऑटो सेक्टर एज वेल. Got it. तो ये क्वेश्चन रेमंड का केशव जोशी ने पूछा था, होपफुली उनका आंसर हो गया होगा. I 4-5 और क्वेश्चंस. I just wanted to ask Trendonomics, Yashraj, Akshay, are you okay continuing, or should we take this the next time around? Actually, I need to wind it up. Okay, cool. ठीक है. So let's call it a day, or let's call it a night right now. Thanks everyone for joining in. Thanks Yashraj. Thanks Akshay for coming, for confirming on this podcast, and Trendonomics for the surprise guest entry. It's always lovely to have all of you on the board. Hopefully, we have received great feedback already on this podcast, and thanks everyone for listening in and sharing your comments and polls वगैरह answer करने के लिए. It was lovely hosting all the 3 experts on this platform. Thank you so much. Until next time, take care. Good night. Thanks, Himanshu. Thanks, everyone. Thank you, Himanshu. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.